Hello everyone, this is rishyjee. Welcome back again. I know it's been very long since I have posted any video on this channel और कुछ चीज़ ही ऐसी थी इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा था. But before getting into the details, first of all, from the video thumbnail itself, you might have guessed कि मैं इसमें क्या बातें करने वाला हूँ. That is colorful dreams but blank reality. Yes, it's been like most difficult last few days in my life. पिछले कुछ दिनों में प्रोबेबली मैं बोलूँगा मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर और सबसे कड़ा इम्तिहान हुआ. नॉट इन टर्म्स ऑफ समथिंग व्हिच आई वाज़ डूइंग. I'll directly get into what things were happening, what had happened in past few days or past few years. But before getting into that, first of all, I'll explain my absence. मैं एब्सेंट क्यों था? मतलब मैं यूट्यूब पर पिछले काफ़ी दिनों से मैं क्यों एब्सेंट था? बिफोर गेटिंग इनटू एवरीथिंग मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, मैं एडमिट करना चाहता हूँ कि जून 2020 दैट इज लॉकडाउन के समय से जून 2023 यानी कि आज तक मैं सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से अनअवेलेबल था, पूरी तरीके से अपने आप को रिसीव्ड किया था बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग. एंड वॉट आई वॉज डूइंग इन दोज ईयर्स? तो एक्चुअली में आई वॉज नॉट एट ऑल प्रेजेंट एनीवेयर. मैं एक्चुअल में आई वॉज स्टडिंग. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं पढ़ क्या रहा था, व्हाट आई वाज स्टडीइंग इन दोज 3 इयर्स, इन पास्ट 3 इयर्स. तो एक्चुअली मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि व्हाट आई वाज डूइंग इन पास्ट सिंस पास्ट 3 इयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डू नॉट वांट टू मेक नॉइज रादर देन आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग. क्योंकि काम करना, पढ़ना विच इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई डू दैट. और मैं बिकॉज जो मैं कर रहा था, पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या कर रहा था. मैं पिछले 3 साल से लगातार सिंस लास्ट सिंस पास्ट 3 इयर्स मैं पूरी तरीके से होल हार्टेडली डेडिकेटेड मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था. आई गेव 3 अटेम्प्ट्स in this span of past 3 years. First attempt I could not make it. Second attempt I again could not make it. And in third attempt, unfortunately, despite making the best possible efforts of whatever was possible, मैं नहीं क्लियर कर पाया. पास्ट 3 इयर्स मैंने अपनी जिंदगी के सबसे 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 बेहतरीन, सबसे ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई की. सबसे. बट डेस्टिनी हैज समथिंग एल्स टू से, सो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट. देन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग, मैं डील करना चाहता हूँ फेलियर्स. बिकॉज in this society, in our society in general also, mostly we celebrate successes and we always feel ashamed of failures. हमें डर लगता है, हमें failures को accept करने से डर लगता है. We do not want to talk about failures. मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं failures के बारे में बात करूंगा तो people will start judging me. क्योंकि सबको अपना बहुत ही बेहतरीन एलिमेंट तो दिखाना होता है, बट उनके वर्स्ट को नहीं दिखाना होता है in terms of when they fail. I'm not here to talk about those who do not put in lot of efforts or at least the desired effort and they could not make it. Of course, they do deserve their due credit of whatever effort they have put in. बट मैं यहाँ पर उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एफर्ट दिया हो. Those who have put in their blood, sweat and tears into this preparation or any preparation for that matter. But despite making this, if they are not able to make it in the final list or they are not able to clear the exam, I would say
यू हैवंट फेल्ड, इट्स जस्ट दैट कि वहां पर आपको नाम नहीं आया, इट्स मेयरली दैट थिंग ओनली। अगर आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से एफर्ट किए हैं, देन you do not lose your now. Why? Because it's more important to be meaningful than successful in my personality. आपको मीनिंगफुल होना है, आपको सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल who could be successful but they are not meaningful। और यहाँ पर अरबों खरबों लोग होंगे जो सक्सेसफुल तो भले ही ना हो इन द सोशल एक्सेप्टेंस, जो सोसाइटी जिसे सक्सेस, जिस तरीके से सक्सेस को डिफाइन करती है, वो भले ही सक्सेसफुल ना हो बट दे आर मीनिंगफुल इन देयर। नेक्स्ट थिंग इज, अब ये फेलियर्स, ये जो फेल हुए हैं उसके आगे क्या, आई विल से समटाइम्स इट टेक्स द वर्स्ट पेन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट चेंज। सो आई आस्क यू, this is the time to bring out the best change in your life, because it genuinely takes a lot of pain to bring out the best change in my life। मैंने आज तक कभी भी इस लेवल का पेन महसूस पर्सनल लेवल पर नहीं किया। नॉट बिकॉज आई फेल्ड, बट बिकॉज आई हैड पुट इन एवरीथिंग, ऑल रिसोर्सेज वर एग्जॉस्टेड। मैंने अपने सारे के सारे शस्त्र आजमा लिए थे, कुछ भी, सारे के सारे, चाहे वो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एग्जॉस्टेड एवरीथिंग, बट आई and I did everything, but I couldn't do it. Then I realized कि सक्सेस इज इन द जर्नी एंड नॉट इन द डेस्टिनेशन। बिकॉज इस प्रोसेस में लोग, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यस, इफ आई वुड हैव क्वालिफाइड तो मुझे सोशल सर्विस करने का, सिविल सर्विसेज का मौका मिलता, उन ऑफिसर्स को ज्वाइन करने का मौका मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट। सो आई वुड नॉट गेट दैट फॉर्मल एक्सेप्टेंस। तो ठीक है, एक चीज अगर नहीं डिलीवर हो रही है डिस्पाइट मेकिंग सेवरल persistent effort, it means that there is something else I need to explore. And this is the reason why I say sometimes it takes the worst pain to bring out the best change. And to those who have failed in this prelims or in this examination, after making best efforts, after doing everything which was possible, मैं कहूँगा failure is a fuel for you champion. Failure is a fuel for champions. So don't be disheartened. Don't be discouraged. Don't be discredited by people around जिनकी कोई credibility अपनी खुद की नहीं है। Leave it. उनको छोड़ दो, उनके बारे में मत सोचो। Finally, I'll say, और ये चीजें मैंने पर्सनल लेवल पर फील की है कि in the pursuit of excellence there shall be moments when it seems that the dream is lost. In the pursuit of excellence there shall be moments when it seems that the dream is lost. It is then that you should, it is then that you should have faith in the person that you are. Please do not lose faith in yourself. Now, I'll not lose faith in myself, because this exam is for making. This exam is not losing something. This exam is not about losing your inner self. क्या मैं ये एग्जाम अगर क्लियर नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या है कि मेरा वर्थ पूरी तरीके से, मेरी पूरी वजूद खत्म हो गई है? Even if the whole world comes together and say this to me, I'll not take it. मैं accept नहीं करूँगा, because for me, external validation is not the parameter to judge myself. And I'll request those of you who have put in your honest best effort, please don't let anyone else to define your worth. आप अपने आप को किसी और, आपकी क्रेडिबिलिटी किसी और के जरिए मत मांगो। Get inner validation rather than getting validation from outside. But
The condition is that you should have put in utmost honest. And if you did that, then I salute you. Next is, I'll say this with all the heart which I have, that sometimes, only sometimes, letting it go is more important. It is not easy, but it is important nonetheless. Because failing is also part of it. और मैं ये कहूंगा कि अपने आप को मारो मत, अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने खुद को मारो, अपने सपनों के लिए लड़ो, एक तरीके से नहीं तो किसी दूसरे तरीके से अपने सपने को साकार करने के लिए लगो। क्योंकि तुम योद्धा हो, तुम जुझारू हो, तुम लड़ो, जिंदगी जी ही लो या पल पल मर लो। तो मैं कहूंगा जिंदगी जी ही लो। Now what next? This is the most important thing. This is the reason why I'm making this video also. I'll offer guidance to future aspirants. Now it may seem ridiculous, it may seem uh, laughable that मेरी खुद की credibility है या नहीं. In fact, when I was discussing this about what I'll do in times to come with one of my friend, and he was saying, "Hey, you should join your software job or whatever you were doing earlier. Get back to your parent discipline. Because you do not have that credibility, so that people will who would want a failure to guide a person who has failed himself to guide. Who would want that?" I said that despite the fact that I have failed, but I have put in honest efforts, I'll offer my guidance. It is up to the people to decide whether they want to continue with my guidance or not. ये उनको डिसाइड करना है. I am leaving it up to you whether you want any sorts of guidance from a person who have failed twice, not once, not twice, but thrice in this particular reason. It is up to you. It is up to you to decide. But the thing is that before getting ahead, going ahead, I must say this कि अगर आपको ऑलरेडी कोई गाइडेंस मिल रहा है और आप उससे खुश हो, यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी अबाउट विद द गाइडेंस विच यू आर गेटिंग, चाहे वो किसी क्लासेस में हो, चाहे वो किसी मेंटोर से मिल रहा हो, चाहे वो किसी किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी ऑफिसर से मिल रहा हो, देन आई सजेस्ट प्लीज डू नॉट स्विचिंग, प्लीज डू नॉट लुक फॉर अदर गाइडेंस. क्यों? क्योंकि you will waste your time, you will waste your efforts, because those who are giving those guidance, and if it is working for you, then please do not change it. It is really hard to get right kind of guidance in this exam, because there are millions of wrong advices, wrong guidance which is peddled on the social media platform and also personally. तो मैं बोलूंगा कि प्लीज मत चेंज करना, कुछ भी हो जाए. मैं यहाँ पर कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. Something which has not worked for me, something which has worked for me, because I have failed in the exam, but there were several battles in between. मैं वो उन सारे battles को जीता हूँ. I might not have won the whole war, but I have won the small battles. I have won the small scuffles. तो मैं उसके experience के basis पर I'll share whatever I could. But please, अगर आपको अच्छी guidance मिल रही है, if you are satisfied with the guidance which you are getting, please do not change. This is I am requesting you with folded hand, please do not change. And again, and why am I saying this? Why will I offer guidance to the future aspirants? Because, in my opinion, healing begins where the wound was made. जख्म का मरहम वहीं से शुरू होता है जहां पर जख्म लगा था. तो I have failed, so I want to offer my guidance to everyone, those who want it. Now, finally, अंत में मैं कुछ चीजें बोलूंगा which is very close to my heart, which I'll say कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही.
यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर पेशेंस। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।